के लिए मैंने इसको फिलहाल ऊपर रखा है, बट इसको बाद में मैं टेबल के पीछे रख दूँगा। फिलहाल के लिए जो मैंने इसमें कनेक्शंस किए हैं, इसमें मैंने अपना राउटर डायरेक्टली कनेक्ट किया है, अपना मॉनिटर डायरेक्टली कनेक्ट किया है, एंड उसके अलावा मैंने इसके अंदर अपना एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट किया है, जो कि शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस एक्सटेंशन बोर्ड में जो फिलहाल कनेक्शंस हैं वो है मेरे डेस्कटॉप स्पीकर्स, मेरा मैकबुक प्रो, और इसके पीछे मेरा एक लेनोवो का लैपटॉप है जो कि यूजुअली बंद रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक गूगल होम एंड दिस लैम्प, एंड देन आई हैव अनदर एक्सटेंशन कनेक्टेड टू दिस एक्सटेंशन जो कि मेरे टीवी को एंड साउंड बार को पावर देता है। यूजुअली टीवी और साउंड बार इसके साथ में रेयरली चलते हैं, बट आई विल हैव टू सी कि ये यूपीएस इन सबका लोड एक साथ ले पाएगा या नहीं। ओके, अब मैं थोड़ा सा लोड टेस्ट करने के लिए अपने इन स्पीकर्स को ऑन करूँगा, अपने टीवी को ऑन करूँगा, अपने साउंड बार को ऑन करूँगा, और उसके बाद जो इसका मेन स्विच है उसको ऑफ कर दूँगा, एंड आई विल सी कि कितनी देर तक चलता है। आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग ऑन द टीवी। Okay, so I tested this with my laptop on, my monitor on, my 2.1 channel speakers on, my TV, 49-inch TV on, and my Sony home theater on. With the TV on, it started beeping a little faster after 5 to 6 minutes. I waited about 2 minutes more, that is like 7 to 8 minutes before I turned off the TV. As soon as I turned off the TV, the beeping stopped. Actually not stopped, but it started beeping slowly. The beeping was not affected by turning off the home theater or these speakers. It got affected by turning off this TV. So basically after 8 minutes I turned off the TV and the home theater, and the rest of the stuff was still working. And after 10-12 minutes it started beeping a little faster, and about after 17 minutes everything got shut down. I think it will give me 20 minutes with the most important electronic items on my desk turned on. One is the screen, second is the laptop, and third is the Wi-Fi router. And I think that is more than enough for me, because the power backup in my area usually kicks in after 2-3 minutes. Even if the TV and home theater and rest of the things on my desk are turned on, I will have plenty of time to turn off the electronics that are not important, like TV and home theater. So remember that I just unboxed this and I charged this for about 25 to 30 minutes and did all of this testing and everything. And I think this serves my purpose, and it seems like a good UPS. There is also a battery saver button which turns on if you long press it. According to the manual, this battery saver mode will double up the battery life, but it will reduce the runtime of your equipments. And on Amazon, I have seen many reviews with complaints that this UPS works only 5 minutes with just a single router. That is actually not a problem. It is a feature called no load shutdown. So in case the UPS is drawing less than 30 watts of power, in that case it will automatically shut down after 5 minutes. If you want to use this UPS just for your Wi-Fi router, then you can turn off the battery saver mode and it will work as normal. I hope this review was helpful. Thanks for watching.